वेल इंडिया की वन ऑफ द बिग टायर कंपनीज अपोलो टायर्स ने हाल ही में अपने वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द एडवेंचर टायर सीरीज लॉन्च की है एंड दैट इज़ द ट्रैम्पलर, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड, XR एंड ST. So street and extreme, so adventure and for road conditions. ये टू व्हीलर एडवेंचर टायर्स हैं एंड मेरे साथ इस वक्त मिस्टर सतीश शर्मा हु इज़ द प्रेसिडेंट एट अपोलो टायर्स यहाँ पर कंपनी के बारे में, ऑफ कोर्स इन टायर्स के बारे में बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है एंड लवली टू हैव यू टुडे ऑन आवर शो। पहले तो सर दीज टायर्स दैट यू लॉन्च, आई थिंक द टू व्हीलर सेगमेंट जहाँ पर आप का शेयर इज़ रिलेटिवली स्मॉलर बट आई थिंक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कैसे ये दो टायर्स फिट इन करेंगे वो स्ट्रैटेजी में जिसमें आप अपना मार्केट शेयर और बढ़ा रहे हैं? आई बिलीव इट्स 10% ऑलरेडी। या हम हमारे टू व्हीलर मार्केट को बड़े अलग तरीके से देखते हैं। लाइक यू सेड कि वी आर करंटली स्मॉल और हम काफ़ी देर से आए हैं इस मार्केट में। तो हमारा जो नज़रिया है मार्केट को देखने का वो ये है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी जो कि हमारा मेन मुद्दा है कस्टमर को पेश करने का अपने टायर के माध्यम से, उसको हम किसी तरीके से दिखा पाएँ। एंड इंडिया जो है बहुत तेज़ी से परफॉर्मेंस सेगमेंट की तरफ जा रहा है एंड यहाँ पे हमने रेडियल टेक्नोलॉजी को जो कि इंडिया में नहीं है इस समय, स्टील बेल्टेड रेडियल टेक्नोलॉजी को, उसको हमने पेश किया है 2 साल पहले। हमारे अल्फा टायर्स थे, आज हमने ऑन ऑफ रोड टायर्स ट्रैम्पलर प्रेजेंट किया है। सो हमारे को जो कंज्यूमर एक्नॉलेजमेंट मिला है वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत तेज़ी से, जैसे आपने कहा, हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है और ये जो इंडिया में ये टेक्नोलॉजी नहीं है और जैसे ये एक ऑनेस्ट प्राइस में इंडिया में आएगी तो हमें लगता है कि वील वेरी फास्ट पेनिट्रेट द। So 10% will become what, let's say, over a period of time? क्या target है in terms of volumes that this product can bring in? So जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें हमारा मार्केट शेयर 20% प्लस है जी, एंड हमारी अपेक्षा रहेगी कि उसको हम 20 से 50% लेके जाएं। In what time frame, sir? In about 2 years time frame is what we are looking at. More than double. More than double, yeah. Okay. Because you know there's hardly any competition. The competition is not woken up to giving the very cutting edge of technology, sure. and that's where we are playing. But sir, these tires of course domestic demand के लिए तो अच्छे हैं ही, but because you obviously look at export markets too, so वहाँ पर क्या strategy रहेगी? And I think the demand is also looking pretty handsome, especially Europe में, क्योंकि जिस तरह से कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से इंडिया को बहुत क्लोजली अब देखा जा रहा है टू probably feed to the world. So what will be the role there for Apollo? No, you're absolutely right, and we are now the largest exporter out of India for car tires and truck tires. जी. So वो तो हमारी जो strategy है एक्सपोर्ट करने की यूरोप में and elsewhere, that's a really strong strategy. We have built a great portfolio and we have got a acknowledgement of the customers in those markets. तो वो तो चलती रहेगी। टू व्हीलर्स में हमारा एक्सपोर्ट्स में अभी इंडिया को पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना है। Of course, India is the world's largest two-wheeler market. Absolutely. जी, okay, so export strategy रहेगी। $5 billion कंपनी का जो टारगेट है that you've set out for yourself by 2026, we are pretty close, I would say. You're already a $2.5 billion company. So do you think जिस स्पीड एंड जिस स्पेस से आप बढ़ रहे हैं शायद ये पहले अचीव कर ले than the timelines that you've put out? Now you're putting a lot of pressure. But yeah, let's just say कि हमारा गेम प्लान जो है अपने विजन को अचीव करने का, it's a well thought out game plan. We have put all the building blocks in place in all the markets that we operate, and we are at the moment quite confident that we should achieve what we have sought out. You know, in many ways we can say that commodity prices जो कि अब क्योंकि कूल ऑफ हुए उसका एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी टायर सेक्टर हो जाता है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं ऑफ लेट लॉट्स ऑफ ब्रोकरेज हाउसेज हैव बिकम वेरी बुलिश ऑन द टायर सेक्टर ओवरऑल। अपोलो टायर्स पर्टिकुलरली बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज के टॉप पिक्स में है, टारगेट्स हैव बीन रेज्ड, द स्टॉक हैज एक्चुअली रन अप क्वाइट वेल इन द लास्ट 1 month, 20% तक यहाँ पर हमने एक स्पाइक देखा है विच इज़ come now. So हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो ये शो देख रहे हैं आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखें कंपनी की प्रोग्रेस, ग्रोथ, इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट एंड यू थिंक द सेक्टर इज़ लुकिंग प्रॉमिसिंग एंड सॉलिड नाउ? जो सिक्लिकलिटी कभी कभी हम देखते हैं उससे हम बाहर हैं? Yeah, that's a good question. I think the community, the investor community has seen into our strategy and
and they see that our basics are strong. The best of Apollo is ahead of it. We are already invested into capacity. We are having already great products. We have launched multiple products to consolidate our position in all segments of the market. So we have got a strong game play. And even when the times were tough, the commodity and the inflation was very high, we have been taking all the right decisions and stick to our knitting. So I think they are seeing through that basic play that we have, and probably favoring us with their positive. Sure. And sector सर लग रहा है यहाँ पर अब कुछ साल अब हम यहाँ पर एक growth momentum continue देख पाएंगे with the way the demand for the automobile industry is also growing. I think वो भी एक कारण है. हम देख रहे हैं most of the cars में waiting period है. But again, that's of course a good story. But मैं इसी के साथ एक challenge जो हम देख रहे हैं, semiconductor नहीं आ पा रहे गाड़ियों में, तो is that causing some problems for you guys because cars are not rolling out, so you're stuck with inventory? So market mein, I mean, there are a lot of challenges in the automotive market. So the story is not as rosy as you are perhaps painting it to be. There are several challenges. But given those challenges, and in the long term, the trends are obviously positive for the Indian automotive market. We feel कि जो अपोलो का जो गेम प्लान है, वो एक काफ़ी सोचा हुआ गेम प्लान है, and all our strategies are playing out the way we would like to, so we are confident about it. Okay, you're confident. Sir, growth targets अगर मैं इस साल की बात करूँ, FY23, seasonally Q2 is a weak quarter, Q1 was quite nice. तो साल कैसा एंड करने का देख रहे हैं? क्या मार्केट शेयर टारगेट्स रहेंगे सर when you talk about different segments of the business? Top line, bottom line कैसे grow करेगी? Yeah, so our attempt is to grow faster than the market. So sure. Nothing beyond that I can tell you. But जो भी रफ्तार से मार्केट चलेगी, उससे अगर हम थोड़ा बेटर कर पाए, तो that will be our effort. Okay, and what about sir market share? So far, till the end of quarter one, we have been gaining market share. Quarter two is a tough quarter, as you have already said, and we have been at the forefront of also tackling inflation and increasing our prices. So that also puts some challenges. Let's see once the quarter ends whether we gain or we lose. But it's a marginal whether it's going to go up and down because everybody is in the same, sure. Same. But I feel that for the longer period of the annualized year, we should do pretty well. Okay. And finally, sir, profitability is a very key element to any business. और मैं ये जानना चाहूँगी आपसे because commodity prices अब cool off हुए हैं. We've seen series of price hikes that were taken. But now, do you think there is no room for any price hike, or there could be? आप margins को और कैसे बेहतर करेंगे? How about working on some high-end margin products? Technology, of course, is a big play in this. So, for the companies, from that standpoint, how important and critical is to continue to improve margin? Margins का vision क्या है, sir? आपने $5 billion तो अपना top line की बात की, market cap की बात की, but what about margins पर क्या vision है over the next 2, 3, 4 years? Yeah, our vision is again on the margin is to have a strong double-digit operating margin, to have a good return to our investors, to good return on the capital employed. So we have set benchmarks around all those parameters. Okay, and M&A opportunities, sir, do you think ये consolidation इस business में अभी और आ सकता है? Of course, थोड़ा fragmented भी है, lots of players are there, but as a big player and very you're 50 years young, you said, आपको लगता है ये अच्छी opportunity होगी to maybe go out and shop? Right now, we see all the growth coming through the organic route. Okay, so nothing on the radar right now. And exports will contribute how much, sir, at some point? Because domestic market is playing off well. Export में आप largest exporter हैं इस वक्त. Yeah, it's becoming a very significant. We are already 16% of our revenue from India is coming from exports. Sure. It should become 20%. In couple of years? Maybe a couple of years. Okay. All right. Thank you so much, sir. Thank you. Lovely speaking with you as well.